Hello everyone, welcome back to the channel Learn English with Nandita. Today we are dealing with a literature poem from class 10th CBSE, The Trees by Adrienne Rich. Adrienne Rich was a poetess who was born in Baltimore, USA, and she was an essayist, a poetess, as well as a feminist of her time. So here also we find that streak of feminism, and we find that she is in support of fighting for your freedom, reaching out to the sky, and welcoming changes for womanhood. Therefore, this poem, The Trees, womanhood has been equated with the trees, and trees inside someone's house or inside greenhouse, like they want to have an escape into the nature, into the forest. Similarly, she is drawing parallel and saying that women who are forced to be left inside and do only indoor works have same kind of capabilities, same kind of aspiration, and they too need to be out there in the society because that is where they are supposed to be. Like the trees are supposed to be in the forest, similarly, women are supposed to be out there in the society, framing their own personalities and their own lives and making the lives of others better by doing so. Okay, so everywhere out of this, all the three stanzas, you find parallel between womankind and the trees who are trapped. Okay, and these parallels are drawn through imageries and various other figures of speech, which we will be discussing by and by, right? So let me first read out the poem to you. Okay, but before that, let me also give an outline, just like I've given the outline in English. Let me give a short outline in Hindi as well. ट्रीज द ट्रीज रादर, ये वाला जो पोएम है, इनकी पोइटिस जो है, कवियत्री जो है, वो है एड्रियन रिच, जो यूएसए की राइटर है और पोइटिस हैं, और वो फेमिनिस्ट भी है। वो स्त्रियों के फ्रीडम के लिए, अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई की है अपनी ज़िंदगी भर, और इस कविता में भी ट्रीज़ के ज़रिए वो विमेन काइंड का जो प्रॉब्लम्स है, जो फ्रीडम नहीं पाती हैं, जो उन्हें अंदर रखा जाता है, जो उन्हें छुपाया जाता है, जो उनके नेचुरल सराउंडिंग में नहीं लाया जाता है, इस बारे में हमें बताती हैं, जगह जगह पर बताती हैं. Okay, so let's read out the poem, The Trees by Adrienne Rich. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by the morning or by morning, right? So in the first stanza, you can see that there is lot of enjambment. That means the entire stanza is a single line, right? A single sentence, and it gets its full stop right at the end of it. Okay, so that is one of the figure of speech, and there are many imageries also used over here, and you can see how the trees are trying to are supposed to be in the forest, because without the trees the forest was empty all these days, and how that emptiness has been shown by showing that the birds could not sit on the branches, the insects are not getting anything to hide under it, and the sun is also out there with the outreach of rays without any place to bury its own feet. Okay, bury matlab यहाँ पर ढक देना, okay, to hide its own feet. So forest was also empty all this time, right? All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors.
Again here, the tree's struggle towards freedom has been shown and amplified. बहुत बढ़ा चढ़ा करके ट्रीज के स्ट्रगल के बारे में बताया जा रहा है. पहले स्टांजा में ट्रीज के बगैर फॉरेस्ट कैसे एम्प्टी था वो बताया गया है, और ये बताया जा रहा है कि सुबह तक उन लोग अपने को आज़ाद करके फॉरेस्ट में पहुंच जाएंगे, और तब फिर बर्ड्स उनके ऊपर बैठ पाएंगे, इंसेक्ट्स उनके साथ छुप पाएंगे, और सन भी अपने शेडोज़ को, अपने फीट को उसके अंदर बेरी कर पाएंगे या ढक पाएंगे. फिर बताया जा रहा है दूसरे स्टैंडर्ड में कि जो रूट्स हैं वो जो वरांदा के साथ जुड़े हुए हैं वो उनसे उखड़ना चाहते हैं, डिसengage होना चाहते हैं. एंगेज ऑपोजिट इज डिसengage, राइट. And the leaves are also straining themselves. Strain, exertion, all such words है ना. exertion का मतलब भी होता है कि बहुत थकान महसूस करना, है ना. ये सारे क्रैम्प, ये सारे जो हैं उनकी तकलीफ़ों को, उनके भाग दौड़ को, जद्दोजहद को ही बता रहे हैं कि ट्रीज़ किस तरह से आज़ाद होना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं. I sit inside. Now, this I is the actual voice of the speaker, Adrienne Rich. And what she is doing in this third stanza is she is disengaging herself from this fight of womankind, right? And she is trying to be an audience herself, right? She tries to be away from that, right? I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Okay, so that's the third stanza where the poet is watching the trees go by from the windows, and she is disengaging herself from the fight of the trees, right? But she can see the moon shining from there. She can also see their fight reaching to a culmination, and they are moving out into the forest. But she wants to be an audience just like us. Okay. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. This is the first line, okay? And you can see कि पूरी अच्छी तरह से वो बता रही है कि ट्रीज इनसाइड में हैं और वो आउटसाइड जाना चाहती है. और कहाँ जाना चाहती है? फॉरेस्ट में जाना चाहती हैं, क्योंकि फॉरेस्ट भी उनके बगैर खाली है, दुनिया भी स्त्रियों के बगैर खाली है. ये दोनों पैरेलल बता रहे हैं विमेन काइंड का और ट्रीज़ का. ठीक है, ट्रीज़ को भी जैसे कि आप अंदर सजावट के लिए बंद करके रख दोगे तो वो सही नहीं है, ना ही उनके खुद के लिए, ना ही दुनिया के लिए या फॉरेस्ट के लिए. ठीक उसी तरह से विमेन काइंड को भी आपको दुनिया में जाने देना चाहिए. ओके. Then comes the next line, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. Trees are essential for everyone. Okay, even for the tiniest insect, trees are essential where they can hide themselves. छुप सकते हैं trees के अंदर में. Birds can sit on the branches, on the boughs, right? And sun also, जब sun rays पड़ते हैं तब भी वो छुपते हुए गिरते हैं, तरह तरह के कलर्स क्रिएट करते हुए गिरते हैं अगर ट्रीज़ हो तो. ठीक है, तो ट्रीज़ का होना जैसे दुनिया में खूबसूरती ला सकती है, वैसे ही विमेन काइंड का होना दुनिया में बहुत ज़रूरी है. Okay, can you see the sun rays burying itself under the trees? Can you see that? See, this is exactly what the poet is trying to convey. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. So all these nights, why this image of night has been used repeatedly to show darkness without the light, without the freedom that should be given to womankind, that should be given to trees, right? So पूरे हर एक रात जो ये फॉरेस्ट एम्प्टी था, सुबह तक ये भर जाएगा ट्रीज से, ये बता रहे हैं. Okay. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor.
सो वरांदा के ऊपर अगर कोई ट्री उग गया हो तो देखना वो जड़ें वहाँ से निकलना चाहती है ना, जिसके वजह से वो सीमेंट वगैरह में भी क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वही इमेज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और विमेन काइंड भी कैसे घर में अगर बंद रहती है तो उनका सारा ध्यान, सारा फोकस वहाँ से निकलने में, जद्दोजहद करने में, बाहर आने में ही निकल जाता है, इस बारे में बताया जा रहा है। ओके, the leaves strain towards the glass. Strain means uh, do lot of, put lot of pressure, ठीक है। वो अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि वो ग्लास की तरफ मूव कर सके। स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स मतलब छोटे मोटे ब्रांचेस, ओके, छोटे मोटे ब्रांचेस। स्टिफ विथ एग्जर्शन, स्टिफ मीन्स feeling tired, okay, with exertion, exertion means with lot of exercise, with lot of effort। जब आप बहुत effort करते हो तो जो आप efforts की वजह से tired feel करने लगते हो, वैसे ही leaves भी जो glass की तरफ move कर रहे हैं, छोटे छोटे branches भी जो glass की तरफ अपने को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इससे वो exerted feel कर रहे हैं, tired feel कर रहे हैं। long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients। even the bows, okay, even the bows which are the main branches, okay, they are also like, you know, newly discharged patient, they are feeling the freedom, okay, to go out, right, like the patient who have been hospitalized and suddenly they get discharged, they feel fresh, they feel you know, anew. Similarly, these branches, these bows are also feeling like newly discharged patients. They are half dazed means they are in their own world and in their dreamy world, their eyes are all dreamy, एकदम अपने ख्यालों की दुनिया में ऐसे ऐसे ही निकल निकल जा रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत मतलब खुशी है कि उनको बाहर निकलने का मौका मिला, वो अब ठीक हो चुके हैं। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, वो क्लिनिक डोर्स की तरफ जल्दी जल्दी बाहर निकलना चाह रहे हैं। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. Scarcely means hardly. मुश्किल से मैं इस इन ट्रीज़ के जाने की बात लिख रही हूँ, लेकिन मैं उन्हें जाते हुए देख रही हूँ। मैं बैठी हुई हूँ, मैं बहुत सारे लेटर्स लिख रही हूँ, लेकिन उन लेटर्स में मैं ये मेंशन नहीं कर रही हूँ कि वो चले जा रहे हैं। The night is fresh, the whole moon shines. In a sky still open, the smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the rooms. Okay, तो the image of night is being presented. Night कैसा दिख रहा है, कैसा फील कर रहा है, कैसा स्मेल कर रहा है, उसके बारे में बता रही है कि मून शाइन कर रहा है, स्काई इज स्टिल ओपन एंड स्मेल ऑफ लीव्स इज देयर, ओके, and it reaches the voices in the room. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, this is the last part of it. And she is saying that my head, now she was trying to be away from all these people who are fighting for their freedom, and she's trying to be an audience to that, but then still there is a blurring of this boundary of becoming an audience and becoming an active member, ठीक है। तो वो एक्टिव मेंबर नहीं रहना चाह रही, वो दूर से देखना चाह रही है, दूर से महसूस करना चाह रही है, लेकिन फिर उसके अंदर भी उसके इनर टर्मोइल्स दिखाई दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि विस्पर्स हो रहे हैं, उसके दिमाग में विस्पर्स आ रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही हैं, और वो हमें ऑर्डर कर रही है, जो एक्चुअल ऑडियंस है, जो एक्चुअल रीडर्स हैं, उन्हें ऑर्डर कर रही है, लिसन, सुनो, तुम भी सुनो। Wind rushed to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. ठीक है, तो ये जो winds हैं वो जो ये चेंज, विंड ऑफ चेंज जो हम लोग बोलते हैं ना, जो परिवर्तन आ रहा है उसके साथ जो हवाएं आ रही हैं वो उनके साथ मिलने के लिए बेताब है, वो दौड़ रहे हैं, रश कर रहे हैं, दौड़ के मिलना चाहते हैं। और जो मून जो साइलेंटली शाइन कर रहा था वो इट हैज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, ओके, क्योंकि मून को भी हम शीतलता और सौम्यता और लड़कियों के साथ जोड़ते हैं, तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो लड़की जिसको कि रोक के रखा गया था, जिसकी सौम्यता को ही दिखाया गया था अब तक, वो उस सौम्यता के दीवार को तोड़ चुकी है, वो निकल
पढ़ी है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए here the poet is using a simile, ठीक है। एंड मून इज likened to or compared to a mirror which is broken into pieces, and the it has been now in the crown of the tallest oak. अब ये सबसे टॉल ओक हो गया है, ठीक है, सबसे ऊंचाई तक वो पहुंच चुका है, ठीक है, ये बता रहे हैं, राइट। ओके, सो दैट्स हाउ द poem ends. And can you see that even the birds require trees and its branches to sit on, to perch on? Okay, and remember, this poem is basically women in form of tree and tree in form of women. There is a parallel which has been drawn between trees and women, and that is how this entire poem has been presented. Okay, so branches reaching out, its leaves reaching out to go out of the glass is the barrier, inside of anything is the barrier, and women have been placed inside it as, you know, only being beautified, but now they want to break free and go out and move out and do lots and lots of things and lots of stuff, which actually they are right now, है ना। We have so many first president and first prime ministers of so many different countries, like Margaret Thatcher in England, or Indira Gandhi, or Pratibha Patil in India, right? We have so many great sports stars, sporting legends like Maria Sharapova, Serena Williams, है ना। And so many other stuff which is happening for the womankind, even in India, like, you know, we have Saina Nehwal or PV Sindhu, or, you know, all such people who are working towards the betterment of womankind, है ना, and who are not stopping themselves at the door end of their own houses, and they are trying to reach out into the society, making their own mark and making the society better, ठीक है। तो जब women kind बाहर आएंगे, जब वो तोड़ के अपने बंधन, है ना, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, moon has been broken into pieces, right? इस तरह से अपने जो ऊपरी जो बनावटी जो ढांचा है, उसको जब तोड़ कर बाहर आएंगे, तभी वो अच्छे से शाइन कर पाएंगे, ठीक है। लाइक हियर इट इज विजिबल, राइट। सो what are the figure of speech which has been used here? The figures of speech which has been used are personification in the first stanza, where the poet says, where the poet personifies the sun, है ना, and as we like to hide our feet under the table at times, ऐसे ही सन भी अपने legs को, feet को bury करना चाह रहे trees के अंडर में, ऐसा दिखाया जा रहा है। फिर simile यूज हुआ है, जैसे कि where the moon has been likened to broken mirror, है ना। सिमिलरली देयर हैज़ बीन एन्चैंटमेंट, जैसे मैंने बताया कि लाइक पूरा का पूरा स्टैंजा, तो जो फर्स्ट स्टैंजा है वो स्टार्ट टू फिनिश एक सिंगल सेंटेंस है ना, कंटिन्यू होता है, व्हेन वन फ्रेज गोज टू अनदर फ्रेज एंड गोज टू अनदर फ्रेज, एंड द कंप्लीशन of entire sentence happens after one or two three lines, है ना। Here in this case the entire stanza, right? Then you also have anaphora, है ना, where no has been repeated again and again. This can be also called as repetition or refrain, but anaphora would be a specific term, because anaphora means जब आप repeat करते हो शुरुआत में, किसी भी लाइन के या किसी भी स्ट्रक्चर के शुरुआत में बार बार रिपीट हो रहा है, तब उसको एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है। सो दिस आर, एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमेजरीज, है ना, like birds sitting on the branches, or moonlight, है ना, the night time, the sun rays, है ना, lots and lots of imageries. And it is advisable that you understand all these imageries and their consequences and their significance in the poem, and with respect to trees as well as with respect to humankind and womankind especially, because these are the imageries related questions, these are the questions which are going to be asked more and more, and that would be very important for your exam. Okay, so hope you have understood. Keep practicing, keep exploring, keep enjoying English. Thank you.